name is Shashank and I am a representative of the team named Etherbots, and our team leader name is Ashwini Kumar Singh. I am from Purnima Institute of Engineering and Technology. Our project is on the robotics and drone, meaning the theme area is robotics and drone. So, what is our project? Well, our project name is Jagriti. It is an assistant. Now, what it can do? It can answer any questions. A user can give any questions in a precise word. Now, what is the difference between our Jagriti and chatbot or ChatGPT? Well, ChatGPT will not give you an answer in precise word until you mention it, but it can. This can. Now, it can also sense human emotions like sadness, happy, fear. It can answer any question a user can give in a precise word. Now, what is the difference between Jagriti and a normal ChatGPT and other chatbots? Well, the other chatbots will not give you answer in a precise word until you mention it, but our Jagriti can. Also, it can sense human emotions like sadness, happy, fear. Also, sentiment too, using deepfakes. Now, what it can do? After sensing the human emotion and sentiments, what it can do? Well, it can easily manipulate its answer according to the mood of the person. Just take an example: if a person is sad, then our Jagriti or assistant will sense that emotion and give answer according to it, consulting him or her. Now, there is no language barrier in this, our assistant can easily speak 9 different Indian traditional languages like Hindi, Punjabi, Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, Kannada, Gujarati, Malayalam, and English too. Now, what is the use of this project? Well, this is only at a software level, but if we develop it in future, then we can easily give it a shape of a humanoid figure. Now, this Jagriti project is at an initial stage. So, it is only at a software level, but if it is developed in near future, then we will try to give it a humanoid figure shape, just like Sophia. Our India will also be able to do this. This Jagriti project is only at a software level, but if it is developed further in future, then we can assure that we can convert this software level project into a humanoid figure, just like Sophia. Our country will also be able to compete with others in terms of robotics, humanoid robotics. Now, let's talk about the technological stacks. The first comes speech recognition. Through this, our Jagriti can easily hear or understand what a person trying to say. It converts the speech into text, and it is in Python library. Now comes Google Translation. Through this, Jagriti can easily convert this particular text into 10 different languages, including English. Now comes GTTS. GTTS means Google Text to Speech. It can easily when it gets the answer, then that answer will be in the text form. But to convert it into speech, we use this GTTS. Now text block. This is also in Python library, which is able to sense the sentiment in text form. But for the emotion part, we will be using CNN, convolutional neural network, and it is a part of machine learning. And to get answer in precise word, we use LexRank algorithm. It is also part of a machine learning. With that, we also use deepfakes and deep. Now, coming back to the use cases here. Now, the first point is language barrier. Okay, now let's see. Coming back to the use cases here. Now, the first point will be the language barrier. Now, let's continue this presentation in layman language so that we can easily understand our view. Okay, language barrier हर कोई face कर रहा है किसी न किसी point पे, but हमारा project से आप language barrier face नहीं कर सकते, because as I mentioned before, our Jagriti can easily speak 9 different Indian traditional languages with English too. Now coming back to the second point, Jagriti can also be used in educational field. अब जैसे कि अभी अपन को पता है जब कोविड पैंडेमिक आया था, उसने अपने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हमें अपनी टेक्नोलॉजीज को आगे इम्प्रूव करते रहना चाहिए, वो भी हर स्टेप पे। तो इसी इम्प्रूवमेंट के लिए अभी अपन ने अपने एजुकेशन को
एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करा दिया। तो अब अपन पास पोर्टल आ गया, बट अब अपन को टीचर्स भी चाहिए, सो वी कैन इजीली यूज अ जागृति प्रोजेक्ट so that it can guide the student or be in a role of a mentor. Now the third will be, it can greatly reduce the loss of human life. Yes, as I mentioned before, अगर इस प्रोजेक्ट को आगे हमने कंटिन्यू रखा और आगे इस प्रोजेक्ट में और अच्छे से काम किया, तो हम लोग इस सॉफ्टवेयर फेस को हम लोग इजीली हार्डवेयर फेस पे कन्वर्ट कर देंगे। Mean we can easily give the shape of a humanoid robotic figure. अब just take an example, आप एक माइंस में काम कर रहे हैं। अब माइंस में एक हल्के से अगर आपने मैथमेटिक्स में कुछ भी आपने एरर कर दिया, फिर कुछ भी आपने मतलब आपका प्रिसीजन गलत हुआ, तो काफ़ी सारे लोगों की जानें जा सकती है। तो इन जानों को बचाने के लिए अपन इजीली अपने जगह पे हम लोग इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भेज सकते हैं। इससे अपने ह्यूमन जो लॉस है वो अपन रोक सकते हैं या फिर ग्रेटली रिड्यूस कर सकते हैं। Now the fourth point will be, it can be helpful in classifying the negative and positive review. Yes, ये अपने सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू इजीली ढेर सारे कमेंट्स या रिव्यूज को छांट सकता है कि हाँ इतने में से इतने % अपने प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और इतने नहीं। Jagriti can help in improving the service provided to the customer by giving them the precise answer to their queries. Now, as we mentioned before कि जागृति बहुत ही कम शब्दों में और बहुत एक्यूरेट वर्ड्स में एक यूजर को समझा सकती है इस क्वेरी का आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑनलाइन पोर्टल है और उस ऑनलाइन पोर्टल में आपने एक अच्छा सा चैटबॉट दे दिया, जस्ट लाइक आवर जागृति। आपने मतलब उस चैटबॉट की जगह आपने हमारी जागृति को रखा, तो जैसे कोई यूजर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यार इसका आंसर क्या होगा, या फिर मैं अपना मतलब एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कैसे साइन करूँ, इसको आगे कैसे प्रोसीड करूँ, तो वो इसको बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड में, बहुत ही एक्यूरेट वर्ड में उस यूजर को उसकी क्वेरी का आंसर दे देगा कि आप ये स्टेप्स कंप्लीट कर दें। तो अब इससे होगा क्या? वेल, द कस्टमर्स एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स टाइम विल बी ग्रेटली सेव्ड। नाउ कमिंग टू द डिपेंडेंसीज। नाउ द फर्स्ट पॉइंट मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, गूगल ट्रांस, जीटीटीएस, टेक्स्ट ब्लॉक्स, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, लेक्स रैंक, वर्ड, डीप फेस, ये सारे यहाँ तक तो पार्ट अपना पूरा मशीन लर्निंग कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा प्रोजेक्ट इन सब चीज़ों पे। दूसरा इंटरनेट कनेक्शन, राइट, क्योंकि हम लोग चैट जीपीटी की एपीआई यूज में ले रहे हैं। ओके, नाउ द टीम मेंबर्स डिटेल। The first name will be our Ashwini Kumar Singh. He is our team leader, and his stream is CS, and he is currently in second year. Second is Sheetal Sharma, also in second year. Chahat Gupta, also in second year, and Shashank Singh Shekhawat, and I am in third year CS with AI. Aditya Sahu in second year stream CS code, and Navdeep Doria third year stream is CS AI.